In chapter 1, we saw the nationalistic movements in Europe. Now, in chapter 2, we are going to look at the nationalist movement in Indo-China. That means from the west, we are coming to the east. The Trung sisters fought against the Chinese to save Vietnam. This was, we are talking about in 39 to 43 CE. 3rd century CE, Trieu organized a large army and resisted the Chinese rule. In 1802, Nguyen An becomes the emperor, symbolizing the unification of the country under the Nguyen dynasty. In 1867, Cochin China, that is the south, becomes a French colony. Indo-China का जब हम वहाँ पे राष्ट्रीयता क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, तो वहाँ पे फ्रेंच का राज था और हम वो वहाँ से हिस्ट्री चालू करते हैं उनकी. 1868, scholars revolt movement against spread of Christianity. Now, a lot of people, when the French came to Indo-China, they started spreading Christianity. ईसाई धर्म का जब वो प्रचार करने लगे, तो उसके खिलाफ naturally there was a movement. Control of France over Indo-China, France ने कब्जा कर लिया था. In 1902, rat hunt was started in 1902. Now, when we did the lesson, अगर आपको याद है, तो फ्रेंच कॉलोनी जब बनी, एक एरिया ऐसे बना जहाँ पे बहुत सुंदर घर बनाए गए अकॉर्डिंग टू फ्रेंच आर्किटेक्चर, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम जो चालू हुआ और वो है रैट प्रॉब्लम. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज प्लेग, डिजीज स्प्रेड एंड द रैट हंट स्टार्टेड. हर एक आदमी जो उंदर पकड़ के देगा उसको एक इनाम भी मिला देंगे. तो उसका पूंछ वो लाते थे, कभी वो पूरा लाते थे, फिर वो दोबारा उसको छोड़ के फिर से पकड़ के देते थे ताकि वो उसमें से कमाई कर सके. In 1903, the modern part of Hanoi was struck by bubonic plague. So plague जो है वो कैसे फैलता है, जो उंदर रहता है उसके ऊपर एक पिस्सू रहता है. In English we call it a flea. And because of that, the bubonic plague spread in Indo-China. 1903, Phan Boi Chau formed the Revolutionary Society, Dui Tan Hoi, with Prince Quang De. In 1905, the book The History of the Loss of Vietnam was written by Phan Boi Chau. Vietnam जो था, Vietnam, Cambodia, Laos, we are talking about these 3 areas, how slowly they lost their independence. That means before they were under Chinese. It was not Chinese rule, but they were totally under the Chinese influence, and then now under the French influence. So this was written in a book. 1905, meeting of Phan Boi Chau with Chinese reformer Liang Chi-Kwao. This is pronounced as Ch in Chinese. Q is not pronounced as K but Chao in Yokohama, that is in Japan. 1907, Tonkin Free School was started to provide a Western style education. वहाँ पे जब फ्रेंच बसे, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने इंग्लिश स्कूल्स चालू की, वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए फ्रेंच लोगों ने स्कूल्स चालू की. 1907, जापान गॉट विक्ट्री ओवर रशिया. अभी उनको ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उनको और भी क्यों लगने लगा, अगर एक छोटा देश लाइक जापान, if it can win against Russia, Russia is one of the biggest countries, you know, even today it's very large. Earlier it was even larger when it was USSR, and Japan managed to win over it. तो जापान अगर जीत सकता है इतना छोटा राष्ट्र होके, तो हम क्यों नहीं इनको बाहर निकाल सकते जो फ्रेंच यहाँ पे हम पर राज कर रहे हैं. 1907 to 1908, 300 Vietnamese students went to Japan to acquire modern education. तो नए तौर तरीके सीखने के लिए, मैथ्स, साइंस, ये सब पढ़ने के लिए जापान 300 स्टूडेंट्स को भेजा गया फ्रॉम वियतनाम. 1908, Vietnamese students established a branch of Restoration Society in Tokyo. 1910, the rail link between Yunnan, China and Vietnam was completed. Of course, railway उन्होंने अपने ही हित के लिए बनाया था, तो जैसे यहाँ ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने रेलवे बनाई.
1911, monarchy in China was overthrown by a popular movement under Dr. Sun Yat-sen. तो ये पैरेलल हिस्ट्री हम थोड़ा कर रहे हैं चाइना के बारे में. तो चाइना में 1911 में जो राजा था, मांचू राजा, उसको निकाल के डॉक्टर सन यत-सेन आए. 1913, Fan Boy-chan wrote a play based on the lives of the Trung sisters. If you remember, the Trung sisters were the first ones to revolt and try to gain independence for Vietnam against the Chinese influence. 1920, by this time students were forming various political parties. 1925, only 400 students passed out of 17 million population. अभी फ्रेंच लोगों ने फ्रेंच जब इंट्रोड्यूस किया स्कूल में, एक तो सेपरेट क्लासेस रहती थी शाम को, जिसके लिए आपको सेपरेटली पैसे भरने थे, सभी को नहीं वो करने जैसे था. सो ओनली 400 स्टूडेंट्स, 17 मिलियन स्टूडेंट्स में सिर्फ 400 स्टूडेंट्स पास हुए. Vietnamese girl student was expelled from Saigon National Girls School. A major protest erupted. तो इस लड़की को पहले तो कहा गया कि आप पीछे बैठो, फ्रेंच स्टूडेंट जो है उसको आगे बैठना है. तो वहाँ पे स्कूल में सभी बच्चे निकल गए और उसको एक्सपेल या स्कूल से निकाला गया. 1930 is the Great Depression. उस टाइम ग्रेट डिप्रेशन यानी बहुत बेरोजगारी थी, as well as there was no money, banks were collapsing. You know that Vietnam was the largest exporter of rice at that time. In 1873, the area under rice cultivation was 2,74,000 hectares. In 1900, the area under rice cultivation was 11 lakh hectares. In 1873, the area under rice cultivation was 22 lakh hectares. And in 1931, it became the third largest exporter of rice in the world. तो आप यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि कैसे यहाँ नंबर आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है, कि और लैंड राइस कल्टीवेशन के लिए लाया गया, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे, जैसे यहाँ पे हमको फोर्स करके जो भी उगाना चाहते थे, जैसे टी है या नील है, तो वैसे ही वहाँ पे फ्रेंच लोग उनको राइस कल्टीवेशन के लिए ज़बरदस्ती करते थे, क्योंकि उनको वो एक्सपोर्ट करना था. एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों में भेज के उनको प्रॉफिट मिलता था. 1930, a famous novel by Nat Lin caused a scandal. It showed courage by a nationalist woman. तो एक राष्ट्रीयता दिखाने वाली औरत के बारे में फर्स्ट टाइम एक उपन्यास लिखा गया in 1930. 1939, How movement gained great popularity in Mekong Delta area. In 1940, Japan occupied Vietnam during Second World War. Now, Second World War, if you know, it is from 1939 to 1945. So, Japan took over Vietnam. In 1941, Hyung Fu So, founder of How, declared mad bonds and exiled him to Laos. तो इनको पागल कह के उनको बाहर भेजा गया. Now we look at Ho Chi Minh. In 1890 till 1969, this is the time when he was born and when he died, that is Ho Chi Minh. So if you have a short note on Ho Chi Minh, you can write down his time of birth. 1910, he learned baking. In 1911, he took a job on a French liner. Liner means a ship. तो उन्होंने ब्रेड कैसे बनाते हैं वो सीख के उनको फ्रेंच जहाज पे काम मिला. In 1930, he brought together competing nationalist groups to establish the Vietnamese Communist Party, later renamed the Indo-Chinese Communist Party. वियतनाम में बहुत सारे ग्रुप्स थे, लेकिन उन्होंने एक जुट करके उनको सभी को टुगेदर लाके उन्होंने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी, या उसका नाम बाद में पड़ा इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. 1941, आफ्टर 30 years abroad, he returned to Vietnam. यानी इतने साल बाहर रहने के बाद में वो लौटे. 1943,
He took the name Ho Chi Minh, he who enlightens. Ho Chi Minh का मतलब होता है वो जो ज्ञान का प्रकाश देता है. So ये जो नाम था उन्होंने खुद के लिए लिया. 1945 he became the chairman of the Vietnam Democratic Republic. 1945 में Second World War भी खत्म हुई and you had the Vietnamese Democratic Republic. He became the chairman. 1945, 23rd September, Viet Minh started a general popular insurrection. Bao Dai abdicates. Bao Dai जो थे वो वहाँ के राजा. Ho Chi Minh declares independence in Hanoi in September 23rd. 1945 September, Viet Minh recaptured Hanoi. The Democratic Republic of Vietnam was formed and Ho Chi Minh became the chairman. 1954, the French army is defeated at Dien Bien Phu. In 1954, French tried to regain control on Vietnam. Viet Minh were forced to retreat to the hills. After 8 years of fighting, the French were defeated in Dien Bien Phu finally on 7th May 1954. तो finally French लोगों का हार होने के बाद में उनको निकाला गया. Now the Vietnam War. 1961, Kennedy decides to increase US military aid to South Vietnam. अभी USA Vietnam War में क्यों पड़ी? नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम ये दो भाग हो चुके थे. नॉर्थ वियतनाम जो था वो और साउथ वियतनाम एक था डेमोक्रेटिक एक था कम्युनिस्ट. नेचुरली यूएस डेमोक्रेटिक को सपोर्ट कर रही थी और कम्युनिस्ट के खिलाफ थी. सो यूएस एंटर्ड द वॉर. कैनेडी जो थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जॉन एफ कैनेडी. 1965 to 1975, 17,000 youth, majority of those who were women, worked on Ho Chi Minh Trail. Ho Chi Minh Trail जो था वो एक रास्ता था जहाँ पे कंटिन्यूसली यूएस बॉम्बिंग होता था, फिर भी वो फटाफट बना लेते थे. वो जल्दी से उसको रिपेयर करते थे. ज़्यादातर उनमें औरतें भी थी. 1968, Hollywood made films in support of the war. In 1970, peace talks began. And in 1974, Paris Peace Treaty. तो हॉलीवुड ने जो फिल्में बनाई, अभी ऐसे भी फिल्में बनाई जो सपोर्ट कर रही थी वॉर के लिए और ऐसे फिल्में भी बनाई गई जो वॉर के खिलाफ थी क्योंकि वो दिखाना चाहते थे दैट देयर इज सो मच डिस्ट्रक्शन. 1974 January, a peace settlement was signed in Paris, and 1975 the NLF troops enter Saigon. In 1975, the NLF occupied the presidential palace in Saigon and unified Vietnam. In 1976, the Socialist Republic of Vietnam is proclaimed. There were also some films made which were against war. Duration of some leaders. Famous blind poet Nguyen Dinh Chen, you can see he was born in 1828 and he died in 1888. Phan Boi Chau, born in 1867, died in 1940. Phan Chau Trinh, born in 1871 and died in 1926.